हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। आपका अपना दिल का डॉक्टर अशोक कपूर फिर आपके सामने हाजिर है एंड टुडे विल टेक नेक्स्ट लीप और स्टेप टुवर्ड्स व्हाट वी कॉल हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन इसलिए मैं ज़्यादा एम्फसाइज कर रहा हूँ। आई एम टेकिंग लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ वीडियोज़ विल प्रेजेंट हाइपरटेंशन। इट्स सच ए कॉमन इशू। इसकी स्टेटिस्टिक्स में जाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि आप लोग घबरा जाओगे, but 25 to 40% of the population, at least about in the adult age group, has hypertension. इसको कम करने से हमें इतने फायदे होते हैं which I'll come and discuss later on also. But today, last chapter, last topic, last video, we had discussed about the presentation of hypertension. और मैंने आपको पहले भी कहा था कि silent killer का main presentation होता है asymptomatic. उसके बाद हेडेक, गिडीनेस पे बात हुई तो सिम्टम्स होते हैं। तो अब हम इस पोजीशन पहुंच गए कि हाइपरटेंशन को डिटेक्ट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका या तो खुद ब्लड प्रेशर नापो घर पे। ऑटोमेटिक अच्छी मशीनें, सेमी ऑटोमेटिक भी बहुत अच्छी मशीनें आ गई हैं। दे विल टेल यू वेदर यू हैव हाइपरटेंशन, मोर सो स्पेशली व्हेन टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस यू आर फॉलिंग टू दैट ग्रुप, और यू गो टू योर डॉक्टर, और इवन आई डोंट माइंड गोइंग टू नर्स प्रैक्टिशनर के पास जाओ, अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं। सो देन ओनली यू कैन कम टू नो दैट यू हैव हाई ब्लड प्रेशर और नॉट। तो एक चीज़ हो गई कि इसके प्रेजेंटेशन क्या होने, एम्फेसिस इज मोर ऑन एसिम्प्टोमेटिक प्रेजेंटेशन। नाउ टुडे इन फैक्ट एवरीबडी वांट्स टू नो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन होता क्या है और क्यों होता है? तो होता क्या है वाली बात हम लोग डिस्कस करने के बाद आज हम पहुँचे हैं व्हाई वी हैव हाइपरटेंशन, the causes of hypertension. Before going into the details, I will just tell you about 6 months back I had a gentleman who must be 36-37 years of age. When he entered my clinic, he was about I must say going to almost sweat and fall down. And when I saw him, he was an obese guy of about 98 kg with a height of 160 centimeter. ओबीस मोटे तगड़े थे। तो उनसे जब वो ठीक ठाक थोड़े से बैठने लायक हुए, उनसे हिस्ट्री पूछी गई तो ही यूज्ड टू ड्रिंक ऑलमोस्ट एवरी डे, यूज्ड टू स्मोक 20 सिगरेट्स लाइक ए इंजन एवरी डे। खाने में उनको पता ही नहीं था कहाँ से खाना आता है, क्या खाना होता है। यू नो, बीइंग ऑन ए वेरी टॉप मैनेजरल पोजीशन, ही यूज्ड टू गेट एवरीथिंग एट फोन फ्रॉम जोमैटो एंड ऑल, एंड यूज्ड टू ईट व्हाटएवर यूज्ड टू डू। सो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ओबीस, सिडेंटरी वर्कर की प्रेजेंटेशन थी। उसका बीपी जब नापा गया तो 160/100, हार्ट रेट 96-98 के बीच फ्लैवरिश कर रहा था। तो उसके बाद वो थोड़ा से रिलैक्स हुए तो उनसे डिस्कस करने के बाद मैंने बताया कि आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी मेडिकेशन, आई वांट टू चेंज व्हाट यू वर येस्टरडे एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, इफ यू वांट टू बी ट्रीटेड, इफ यू वांट टू लिव प्रॉपर्ली। Or you won't believe, last 6 months I am following him and now his BP is 130/80. He has lost of course 15 kg of weight in this program which we gave him. He has stopped nearly smoking. He doesn't drinks that much. So all those factors which we have made or which we think were responsible, we tried to negativize them and he was treated. तो अब causes की बात आती है तो ये causes में आप समझ गए होंगे कि obese होना, heavy smoker, heavy drinker, food indulgence, dietary indiscretion, improper sleeping time, sedentary lifestyle. You know, these are very important modifiable causes of hypertension. You know, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हम modify नहीं कर सकते। hypertension में भी ऐसा है, genetics है, आपकी family history है, strong family history, all the siblings are hypertensive, I am also hypertensive. You can't do much about that, you have to resort to your treatment medications. But there are not of modifiable causes, उसमें डाइट की बड़ी इंपॉर्टेंस। हैवी इंडल्जेंस इन सॉल्टेड, स्पाइसी, हैवी फूड्स। मॉडिफाई करिए फूड, आपका ब्लड प्रेशर नीचे आएगा, है ना। नॉट ईटिंग प्रॉपर यू नो फूड्स विच नेगेटिवाइज द ब्लड प्रेशर, लाइक लॉट ऑफ सैलड्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स एंड मैनी कंपोनेंट्स विच वी विल डिस्कस लेटर हाउ दे कैन ब्रिंग अप डाउन द ब्लड प्रेशर। एक्सरसाइज, आपकी एक्सरसाइज ही नहीं, मूवमेंट नहीं है, एक्टिविटी नहीं, द बॉडी सर्कुलेटरी सिस्टम रिस्पॉन्ड्स बाय ब्रिंगिंग अप द ब्लड प्रेशर, एंड दैट्स व्हाई वी फाइंड sedentary people who are not exercising high blood pressure. ऐसे ही obesity is again a modifiable cause where you can bring down the weight.
So in that gentleman we had tried to bring down these modifiable causes, treat them, and he became all right, and he's without medication now. Right now also he's not on medicine and is continuing. We just follow him up. But non-modifiable causes में जैसे मैंने genetics is an important cause. Family history जहाँ पे होती है उसमें hypertension के chances ज़्यादा होते हैं. ऐसे age है. You know, as you grow over the time, after the age of 40, the percentage of having possibility of having hypertension grows. So age cannot be modified, we know. Family history cannot be modified. Race is important, especially African race. Black African race is more prone to hypertension and its complication. So that also we cannot modify. ऐसे कई causes होते हैं, जैसे किडनी में कोई problem आए तो then you can develop hypertension, where we discuss the treatment with the kidney specialist, how we can modify the kidney function and bring down the blood pressure. ऐसे ही बहुत सारे हार्मोनल सिस्टम हैं, जैसे थायराइड है, एड्रीनल्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं, उसकी जो हार्मोनल इश्यूज आती हैं उसमें भी we can come across lot of causes where we can treat them and the hypertension gets all right. So there are modifiable causes, there are non-modifiable causes. तो ये सब causes मिलके blood pressure in the form of multifactorial presentation होता है. It's a multifactorial. It's not very particular कि infection हुआ तो pneumonia हो जाता है. ऐसा नहीं है. Blood pressure में कई factors work करते हैं. किसी की family history work करती है, किसी में sedentary lifestyle है, किसी का खाना पीना सही नहीं. तो ये सब factors आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं कि कोई ऐसा cause तो नहीं है, कोई ऐसा modifiable reason तो नहीं है जो मैं modify कर सकूँ. अब जैसे drink कर रहे हो आप, every evening you are having 3-4 drinks, 2 beers a night, and then you indulge in a lot of food, that can itself give rise to hypervolemia and more sodium retention and the hypertension. तो आज मैं emphasize जो करना चाहता हूँ आप सबके सामने, the most important thing is search for any reason. The doctor will discuss with you, and you also be after that reason and bring down the blood pressure rather than going for medications, which is the last resort always. It's always available. But don't think that you eat lot of salted, spicy, heavy food and next day you take medicine to be okay. It will never be nicely controlled. So the takeaway lesson from that gentleman who came to my clinic with the hypertension, with all the causes, reasons we had, we modified them, he became all right. तो ऐसा डर मन में मत डालिए कि हर दफ़े ब्लड डॉक्टर के पास जाओगे तो लाइफ लॉन्ग मेडिसिन से जुड़ना पड़ेगा. ये आपके हाथ में. Everything is here in your brain system, in your behavioral system, in your psychology, which can help you in treating your blood pressure. तो प्लीज़ आज जो मैंने टॉपिक में पॉइंट्स डिस्कस किए हैं आप जाके देखिए, और मेरे प्रीवियस वीडियोस भी देख के आप समझ जाएंगे कि आपको क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है, आपको ब्लड प्रेशर के साथ नॉर्मल लाइफ अच्छी तरह कैसे बेहतर. पता नहीं, ये सब आपके हाथ में है. तो वंस अगेन आई विल सी यू in with a new video. Till then, have a nice time. Take care of your blood pressure, take care of your health, have a good health. Thank you so much. Namaskar.